अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वज़ीर आज़म जे 1100 अरब जे पैकेज जे हवाले सां, जंहिं सिंध हुकूमत जो चवणु आहे त उन पैकेज मां 800 अरब रुपया सिंध हुकूमत जा आहिनि। वज़ीर आला सिंध पीपुल्स कराची प्रोग्राम जे लाइ 800 अरब रुपए जे मनसूबनि जी जेका डिटेल आहे उहा अॻु में ई ॾेई चुको आहे। इन हवाले सां जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत जे वज़ीरनि जी ॻाल्हि कजे त असद उमर जो चवणु आहे त इन मनसूबे जो सिंध हुकूमत ग़लति बयानी खां कमु वठी रही आहे। इन मनसूबे ते सियासत, इन पैकेज ते सियासत न कई वञे ऐं मन ते 62% जेको आहे उहो वफ़ाक़ी हुकूमत ख़र्च कंदी। छा इहो चई सघिजे थो त ट्रांसपोर्ट, सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं सभिनी मसइलनि जो हल इन्हनि 1100 अरब रुपयनि में आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा जमात इस्लामी पारां वज़ीर आज़म जे 1100 अरब जे पैकेज बारे ऐलान खे मुकमल तरह रद्द कयो वियो। जमात इस्लामी जे अमीर सिराजुल हक़ जो चवणो त वज़ीर आज़म जे अहिड़नि ऐलाननि तरफ़ ध्यानु न ॾियणु घुरिजे। वज़ीर आज़म हिन खां अॻु में बि अहिड़ा ऐलान कंदो रहियो आहे, या का नई ॻाल्हि कोन्हे। फंक्शनल लीग जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त फंक्शनल लीग पारां पिणु इन ते तफ़ज़ा जो इज़हार कयो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त सॼी सिंध में बरसाति मुतासिरनि जी जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी ख़राबु आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर पारां जे दौरा कया विया। वॾे वज़ीर खे बंदनि ऐं बैराजनि जी सूरत हाल ऐं पाणी जे वधंदड़ वहिकरनि जे हवाले सां आगाही ॾिनी वई। जिते गुड्डू बैराज ते वॾी ॿोॾि जो ख़तरो आहे त उते वरी जेके मुतासिर आहिनि उन्हनि खे रिलीफ जे हवाले सां सिंध हुकूमत अञा ताईं उहे सहूलियतूं फ़राहम न करे सघी आहे जीअं फौरी तौरु उन्हनि खे फ़राहम करण जी ज़रूरत आहे। उन में ख़ैमा आहिनि, उन में राशन आहिनि, उन में मेडिकल जे हवाले सां माण्हुनि जी जेका ग्राउंड ते सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी ख़राबु आहे। अॼु वॾे वज़ीर जो चवणु हो त घटि में घटि 23 लख माण्हू, हिकु मोहतात अंदाज़े मूजिबि 23 लख माण्हू मुतासिर थिया आहिनि। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त सिंध जे 20 आफ़त सटियल ज़िलनि जे हवाले सां वज़ीर आज़म खे ख़त लिखियो वेंदो। ऐं इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं नालनि जे हवाले सां। सूबाई हुकूमत जो ग्रैंड ऑपरेशन, पर वफ़ाक़ी हुकूमत जो इहो चवणु आहे त नालनि ते जेके रिहाइशी माण्हू आहिनि उन्हनि खे मुतबादिल फ़राहम करणु सूबाई हुकूमत जो कमु आहे। जॾहिं बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिल्कुलु क्लियर चई चुको आहे त नालनि ते जेके माण्हू कब्ज़ा करे वेठा आहिनि, जेसिताईं उन्हनि खे मुतबादिल जे लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत मदद नथी करे तेसिताईं उन्हनि खे उतां न हटायो वेंदो। मजबूरी तौरु अॼोके प्रोग्रामनि में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ मुसरत नियाज़ी भलीकार चांदी, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PTI सां तालुक़ु रखंदड़ लैला परवीन। आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। मुसरत, कराची पैकेज जे हवाले सां तमामु घणी जेका हाई वज़ीर आज़म जे दौरे जो इंतज़ारु हो। छंछर ते वज़ीर आज़म कराची यात्रा कई, पर वज़ीर आज़म पारां 1100 अरब जे पैकेज जो जेको ऐलान कयो वियो उन ते तमामु घणी सियासत थींदे नज़र आई। सिंध हुकूमत जो क्लेम आहे त इन मां 800 अरब रुपया सिंध हुकूमत जा मनसूबनि जा आहिनि, जेके सिंध हुकूमत ऑलरेडी 800 अरब रुपयनि जे मनसूबनि जो ऐलान करे चुकी आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदि सभी मकसद एक चीज़ थी तो मैं आपको बता दूं कि हम वेलकम कहते हैं कि ठीक है जी वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, लेकिन मसला ये है कि बिल्कुल इस पे इबहम है और पाया भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी वज़ीर आज़म साहब जब कराची आए तो 162 अरब का ऐलान तो हुआ, लेकिन मसला ये कि इसमें ठीक है जी 1100 अरब देने का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें 800 अरब तो सिंध गवर्नमेंट दे रही है अपने। और हम कोई जिस तरह से असद उमर ने कहा कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, जी बिल्कुल हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं इस पे, लेकिन अगर एक चीज़ क्लियर हो जाए तो इसमें तो कोई चीज़ नहीं है कि रस्साकशी तो नहीं होनी चाहिए ना। इसी तरह से वफाकी हुकूमत, हमारा अपना कहना ये है कि वफाकी हुकूमत ने फिर एक तरह से सिंध गवर्नमेंट को भी और सिंध गवर्नमेंट की आवाम को भी एक तरह का चकमा दे दिया है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट तो सिंध गवर्नमेंट के जितने भी आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो वो तो पहले से मौजूद है, उसको उनकी डिटेल तो सभी अखबारात में भी बताई गई है। और इसी तरह अगर KCR का के लिए जो रकम है वो तो चाइना ऑलरेडी दे ही रहा है ना, तो फिर जो सिंध हुकूमत अदा करेगी, मुर्तज़ा साहब ने कहा जी बिल्कुल सिंध हुकूमत उसको देगी। लेकिन मसला ये है कि क्या ही बेहतर होता कि वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया उसको, क्योंकि उससे एक दिन पहले 800 अरब का ऐलान जो था वो पीपल्स कराची प्रोग्राम के तहत, जी बिल्कुल पीपल्स कराची के नाम से CM साहब पहले अनाउंस कर चुके थे। तो क्या ही अच्छा होता कि वज़ीर आज़म साहब इसको बिल्कुल कह देते कि जी 800 अरब अगर, या अब भी कह दें, हमें वो कोई मसला नहीं है कि 800 अरब अगर सिंध गवर्नमेंट दे रही है तो 1100 अरब वफाक देगी। और मैं समझती हूँ कि अगर वो खर्च करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। सिंध के अवाम पर खर्च अगर हो रहा है, और स्पेशली इन्होंने कराची के लिए कहा था और बाद में कहा था कि सिंध इंटीरियर सिंध के लिए भी
اناؤنس کریں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس پر اگر خرچ کر دیا جاتا ہے یا بتا دیا جاتا ہے سندھ گورنمنٹ کو، ظاہری سی بات ہے سندھ گورنمنٹ نے خرچ کرنا ہے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اگر ایک پیج پر جب تک نہیں ہوں گے میں سمجھتی ہوں کہ عوام اس سے مستفید نہیں ہو سکے گی۔ لیلا کیا کہیں گی؟ 1100 ارب بڑے وزیر اعظم جمعے کو اعلان کیا گیا تھا، پھر دورے کو منسوخ کر کے اور ہفتے کا دن رکھا گیا، اور یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وزیر اعظم بہت بڑا پیکج لائیں گے اور جس میں ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اعلان تو آیا، لیکن سندھ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ اس میں 800 ارب روپے جو ہیں وہ سندھ حکومت کے ہیں، صرف 300 ارب روپے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبین، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کو کوئی نہ کوئی اعتراضات رہتے ہی ہیں۔ پہلے ان کو اعتراض یہ تھا کہ خان صاحب آتے ہیں کراچی تو وہ سندھ کی حکومت کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں، شریک نہیں کرتے، اور ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، ان سے سجیشنز نہیں لی یہی جاتی۔ ایک دن پہلے ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ وہ شیڈیول ابھی تک مجھے فائنل نہیں ملا، اور بتا دیں اس کے 2 دن کے بعد شیڈیول ملا۔ یہ اس دفعہ بھی صورتحال ہم نے دیکھی تھی۔ دیکھیں جی، بات یہ کہ شیڈول تو آپ کو پتہ ہے وہ وزیر اعظم ہیں، اور ملکی حالات کیا ہوتے ہیں اور موسم کی بھی کچھ چیزیں چل رہی تھیں، اس حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کو ساتھ بٹھایا اور جو بھی پیکج تھا کراچی کا ان کو ساتھ بٹھا کے اناؤنس کیا گیا۔ اب یہ بات کر رہے ہیں، جیسے میری جو نالج ہے اس میں یہ کہ 400 ارب روپے جو ہیں وہ صوبائی حکومت وہ کرے گی، 400 ارب جو ہے وہ وفاق کرے گی، اور 300 ارب جو سم تھنگ ہے اس کے لیے تھوڑے دوسرے جو مختلف جگہوں سے اس کو فنڈنگ کیا جائے گا۔ لیکن صوبائی حکومت نے تو مرتضی وہاب نے سندھ حکومت کے ترجمان نے تو بتایا کہ 800 ارب روپے ہیں جو 800 ارب روپے اگر نہ بھی کہیں دیکھیں سی ایم صاحب نے 62% جو ہے نا وفاق دے گی، سندھ دے گی، سندھ دے گا، اور 38 جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دیں، اس طرح کا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ کیلکولیشن جو ہے یہ تو میری جو نالج میں تھی، جو ہمارے منسٹر اسد عمر نے ایک بات کہی تھی، میں اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں، اور یہ انہی کا اسٹیٹمنٹ تھا اور میں نے وہیں سے یہ چیز انفارمیشن کلیکٹ کی تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وفاق اور سندھ، دیکھیں پہلے اعتراض یہ تھا کہ کراچی کو وفاق کچھ نہیں دیتا، ہم جی کر رہے ہیں اور وفاق نہیں کر رہا ہے۔ چلیں جی، آپ جتنا دے رہے ہیں، وفاق جتنا بھی دے رہا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم تو عمران خان صاحب ہی ہیں، انہوں نے ہی اناؤنس کرنا ہے، وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہو اور صوبائی حکومت کی طرف سے ہو۔ کراچی کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اور میگا پروجیکٹ ہیں، جس کے بعد کراچی کی شکل بھی تبدیل ہو جائے گی اور 300 عوام ارب کی روپے میں صورتحال بھی تبدیل وفاقی ہو جائے گی۔ حکومت کون سی کراچی کی شکل تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ 800 ارب روپے صوبائی حکومت لگا رہی ہے اگر، تو بلاول بھٹو زردہ نے کہا تھا کہ ڈبل کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو ڈبل کرنا چاہیے، کیونکہ وفاقی حکومت جتنی تنقید کرتی ہے یا جس طرح کی ترقیاتی منصوبوں کو، یا جس طرح سندھ کے شہر کراچی کو اپر اس پہ لیول پہ لے جانا چاہتی ہے، تو اس کو ڈبل تو کم از کم کرنا چاہیے نا کراچی کے لیے، کیونکہ کراچی شہر کا پورا انفراسٹرکچر ختم ہوا ہوا ہے۔ واحد صوبہ ہے صوبہ سندھ جو کہ وفاق سے اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے اور الگ ہی چلتا ہے، ورنہ یہ پیکیجز جو بھی اناؤنس ہو رہے ہیں، میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا ہے کہ وہ سندھ کے حوالے سے ہوں یا وفاق کے حوالے سے ہوں، وہ پاکستانی عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ہے اور پاکستان کی عوام کا اس پہ حق ہے، اور کراچی کا اسپیشلی۔ کراچی کے ساتھ دیکھیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے، پہلے 800 ارب لگا رہی تو پہلے کیوں نہیں کیا لگا چکی؟ سندھ حکومت کبھی نہیں لگاتی، وہ صرف اعلانات کرتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، میں سندھ میں رہ رہی ہوں 11 سال 12 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی حکومت کو، آپ بتا دیں اگر انہوں نے اتنا بڑا لگانا تھا وہ پہلے نہیں لگا سکتے تھے؟ ابھی جب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تبھی ان کو خیال ہے کہ یہ تو ہمارا پیسہ ہے، ان کا پیسہ تو نہیں ہے نا، عوام کا پیسہ عوام پہ لگ رہا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی۔ 300 ارب پہ وہ لوگ کلیم نہیں کر رہے سندھ حکومت، وہ 800 ارب پہ کلیم ہو رہا ہے کہ 800 ارب روپے جو ہیں وہ اس میں سندھ حکومت نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ یہ 800 ارب ہے، 400 ارب ضرور ہے، اور وہ بھی وہ پیسہ ہے جو کراچی کا حق بنتا ہے، وہ سندھ حکومت کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے نہیں آ رہا، مطلب سندھ حکومت کے وزراء کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے نہیں آ رہا۔ چلے میری بہن بچا فرما رہی ہے کہ جی سندھ پہ ہو یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، جو عوام پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے یقیناً وہ عوام ہی کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی نشاندہی کے لیے یہ کہہ دوں کہ میری بہن فرما رہی ہیں کہ وفاق تو 3 ارب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی نالج ہوگی کہ 3 ارب دے رہا ہے۔ 4 ارب کا، اچھا چلیں جی 4 ارب سے 400 ارب، چلیں 400 ارب سے ہی 400 ارب جو ہے نا وفاق اگر ان کے بقول دے رہا ہے، تو 800 ارب جو ہے نا
وہ سندھ گورنمنٹ دے رہا ہے، اور آپ فرما رہی ہیں کہ 400 ارب سندھ دے رہا ہے، تو میں سندھ کی طرف سے بیٹھی ہوئی ہوں، میں بتا رہی ہوں آپ کو جو فیکٹ اینڈ فیگرز بتا رہی ہوں بالکل صحیح بتا رہی ہوں کہ 800 ارب، کیونکہ اس کے لیے سی ایم صاحب نے ایک دن پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا، پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا تھا، سب کے سامنے کیا تھا کہ 800 ارب سندھ گورنمنٹ خرچ کرنے جا رہی ہے۔ اور ایک طرف تو دوسری بات یہ کہ ابھی بھی لیٹر لکھا ہے سی ایم صاحب نے پرائم منسٹر کو، ایک تو شکریہ کے لیے لکھا، پلس ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 2 کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے وفاق جو ہے نا کم از کم ہیلپ آؤٹ کرے کہ 2 لاکھ روپے دے۔ اور کیسے کرے؟ وزیر اعظم تو کراچی سے کے علاوہ کہیں نکلے ہی نہیں، انہوں نے کہا میں دوسری نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو سندھ کے دوسرے شہر، سندھ کے ایک شہر کے علاوہ تو چلیں جی سبین، ہم اسی بات کو بڑا کر لیتے ہیں کہ وہی پیسے جو اناؤنس کر کے گئے ہیں 1100 ارب، وہ بھی اگر سندھ کو وہ 1100 ارب دیتے ہیں تو اس کی تفصیل بتا دیں ایک دفعہ۔ دیکھیں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس طرح اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہ کریں، بھائی ہم اس پہ کوئی سیاست نہیں کر رہے، ہم نے تو وارملی مطلب ویلکم کیا ہے آپ کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں پر، عوام پر خرچ ہو، لیکن جب اگر خرچ ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں یقین اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح کا لالی پاپ خان صاحب نے پہلے بھی دیا 162 ارب کا، 162 ارب میں سے 162 روپے نہیں ملے سندھ کو، تو پھر یقیناً ہم لوگ کہیں گے کہ لالی پاپ ہے یا چکما ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جی لیلا، دیکھیں ابھی لاسٹ ڈیز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، فنڈز ریلیز کیے گئے تھے ایم پی ایم این ایس کو دیے گئے تھے، جو کہ کراچی میں انہوں نے لگائے پی ہیں، ٹی آئی کے ایم این اے، پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو دیے گئے تھے، جی تو ان کو دیے گئے تھے اور انہوں نے کراچی پہ وہ لگائے بھی ہیں، روڈز بھی بنے ہیں، جہاں اور ضروری کام تھے وہ بھی کیا گیا ہے، سالڈ ویسٹ کے حوالے سے تھوڑے جو کام تھے وہ بھی کیے گئے ہیں۔ تو ہم نے بجٹ تھوڑا جو ہم نے اناؤنس کیا تھا اس میں سے کچھ حد تک ہم نے دیا ہے، ایم این ایز کے تھرو ہم نے وہ کراچی پہ لگایا ہے، تو یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ ہم نے بالکل کچھ نہیں دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم پلان کر کے آنا چاہ رہے تھے کراچی میں، جب ہم نے تمام چیزیں جو فائنلائز کی تو اب عوام کے سامنے آ کے خان صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، اور انشاءاللہ بہت جلدی اس پورے پروجیکٹ کو ہم آن کرنے جا رہے ہیں گراؤنڈ پہ۔ تو لیلا، وزیر اعظم سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ سندھ کی راجدھانی، سندھ کے ایک شہر کراچی کے علاوہ سندھ کے باقی اضلاع کا بھی وزٹ کریں گے، دورہ کریں گے، جہاں پر صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، جیسے کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ باقی سندھ کے جو دوسرے شہر ہیں ان کو صحیح سے نہ کوریج مل رہی ہے اور نہ ان پہ کوئی توجہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں وزیر اعظم سے خط لکھوں گا، ان کو کہوں گا کہ 23 لاکھ کم از کم، ایک محتاط جو سروے ہے، اندازہ ہے، اس کے مطابق 23 لاکھ لوگ جو ہیں متاثر ہوئے اور بدتر صورتحال میں ہیں اس وقت۔ یہ جو فگر انہوں نے دیا ہے میرے خیال میں چلیں کچھ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن بہرحال لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک دو رائے نہیں ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں میرپور خاص، دادو اور جہاں جہاں اب سندھو دریا میں جب سے پانی کا بہاؤ زیادہ ہوا ہے تو کئی جو گاؤں ہیں اور ایریاز ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور وہاں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں متاثر ہیں وہ بندوں پہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، میں نے خود دیکھا بھی ہے اور مجھے آئیڈیا بھی ہے اس بات کا، اور بہت افسوس ہے تمام تر جو صورتحال ہے، لیکن اس میں سندھ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب وفاق کوئی کام کرنے آتی ہے تو یا تو اس پہ ایلیگیشن لگا دیتے ہیں یا تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کراچی کے حوالے سے جو ابھی فنڈ ریلیز کیا گیا، یہ پروجیکٹ ریلیز نہیں کیا گیا، اناؤنس کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی اب سندھ گورنمنٹ کے مختلف چیزیں آ رہی ہیں کہ جی ایسا ہے تو ویسا ہے تو ویسا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک کام اچھا ہونے جا رہا ہے، آپ ویسے تو ویلکم بولتے ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے پیچھے وہ جڑیں بھی کاٹ رہے ہوتے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ کی کراچی کی عوام مستفید ہونے جا رہی ہے۔ وہ کراچی وہ شہر ہے جس کے ساتھ مسلسل ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، آج اس کے ساتھ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، اس کی عوام کے ساتھ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ خدا را اس کو پلیز آپ ڈسٹرب نہ کریں، آپ مل کے قدم سے قدم ملا کے آپ جو ہے وفاق کے ساتھ چلیں اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں۔ میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی پیپلز پارٹی سے۔ جی حسرت، دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سبین ریکویسٹ یا نہ، اصل میں ایشو یہ ہے کہ میری بہن فرما رہی ہیں کہ کام
सिंध गवर्नमेंट नहीं करने दे रही। सिंध गवर्नमेंट ने कब रोका है आपको कि सिंध गवर्नमेंट चाह रही है काम ना करें? सिंध गवर्नमेंट ने तो हमेशा से कहा है आएँ और मिलकर काम करते हैं, आएँ और मिलकर काम करें, और काम करने के साथ साथ आवाम पर जो खर्च करना चाह रहे हैं करें। अभी मेरी बहन ने कहा कि हमने MNS को फंड रिलीज़ किए, बिल्कुल किए। यहीं से नाइंसाफ़ी शुरू हुई कि आपने अपने MNS को किए और जो अपोजिशन के MNS थे उनको आपने फंड ही नहीं दिया। तो एक चीज़, और दूसरा ये बता रही है कि कराची पे खर्च हुआ। पार्टी भी करती है ये किराए नहीं, में, देखिए, असेंबली में भी। अच्छा, हमारे MPs को दूसरी फंड दिया? दूसरी मैं एक बात सबीना बताऊं, से देखिए, पूछें कि एक आपके मिनट, PDI मेरी बात एक भी प्लीज MPA प्लीज को आप फंड मेरी दिया बात गया? कंप्लीट होने दें, बिल्कुल भी नहीं प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें। दूसरी वजह ये है कि अगर आपने मेरे अंदाजे के मुताबिक 50% तो इनका फंड वैसे ही ज़ाया हो गया, तो इन्होंने खर्च नहीं किया, ठीक है, वो ज़ाया हो चुका। और दूसरा, जैसे आपने सबीन कहा कि पीपल्स पार्टी ने फंड नहीं दिया, आप मुझे कोई कहीं साबित कर दें, ठीक है, कहीं साबित कर दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA को मिला हो और जो अपोजिशन के MPAs हैं उनको फंड ना मिला हो, तो फिर बिल्कुल गलत के होगी। MPs को फंड नहीं मिलते रहे। सबको मिलते, देखिए, चाहे अपोजिशन के लोग हों, चाहे नुसरत, यही जी, किराए जो हमें सबके। अपोजिशन में असेंबली मेंबर्स की भी सुनने में आती है। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नुसरत भलीकार, तव्हां प्रोग्राम में असांखे ज्वाइन कयो। वॾी महिरबानी सभीन। नुसरत, ॻाल्हि कयूं पिया कराची पैकेज जे हवाले सां। वज़ीर आज़म जो दौरो, 1100 अरब रुपयनि जो वज़ीर आज़म जो कराची पैकेज जो ऐलान, उन ते सिंध हुकूमत जो चवणु आहे त 800 अरब रुपया, मुर्तज़ा वाब जो चवणु आहे त 800 अरब रुपया वॾो वज़ीर सिंध पीपुल्स कराची प्रोग्राम तहत उन्हनि मनसूबनि जो अॻु में ई जेको आहे सो ऐलान करे चुको, ॿुधाए चुकियो। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां जेके आहिनि 300 अरब रुपया ॾिना विया आहिनि, जेके नाकाफ़ी आहिनि। इन ई हवाले सां जमात इस्लामी पारां पिणु इहो चयो आहे त वज़ीर आज़म जे ऐलाननि ते तवजह न ॾियणु घुर्जे। वज़ीर आज़म अहिड़ा ऐलान कंदो रहंदो आहे। उते फंक्शनल लीग पारां बि तहफ़ुज़ा ज़ाहिर कया विया आहिनि। तव्हां छा चवंदियूं वज़ीर आज़म जे इन ऐलान जे हवाले सां त इहे 1100 अरब रुपया वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जेको तनाज़ो आहे, सियासत इन ते थिए थी, कीअं इंफ्रास्ट्रक्चर ते लॻी सघंदो इहो? वॾी महिरबानी सभीन। मूंखे न आहे ख़बर तव्हांजे स्टूडियो में केरु वेठो आहे। PTI ऐं पीपुल्स पार्टी, मुसरत पीपुल्स पार्टी ऐं लैला परवीन PTI। अच्छा, आई डोंट नो हिन महिल कहिड़ी अची पई ॻाल्हाए, पर जेकॾहिं फंड जी ॻाल्हि पई हले, शायदि पोइ तव्हां पुछो पिया त ऑपोजिशन या ट्रेजरी ब्रांचिस खे को फंड मिलंदा आहिनि, जी, उन जी का ॻाल्हि हले पई। जी, उनखे तव्हां लास्ट में इन जो रिस्पॉन्स कंदमि। इनखे अॻु में त इहो त जेको तव्हां बजट जे हवाले सां चयो त जेको फंड आयो आहे वफ़ाक़ी तौर ते 1100 अरब जी ॻाल्हि थी, उहा डिटेल सॼी प्राइम मिनिस्टर ॾेई छॾी। CM पाण मौजूदु हुया। हाणे इहो झगड़ो पियो हलंदो। असांखे ख़बर आहे त इहो ईअं जेकॾहिं छिकताण थी त जेके पैसा आया बि आहिनि उहे पैसा बि सही तरह यूटिलाइज़ न थींदा। पर हिकिड़ी सेटिस्फेक्शन इहा आहे त जेका PICIC जी कमेटी ठाही वई आहे, उन कमेटी जे हवाले सां थोरी सेटिस्फेक्शन आहे त इन कमेटी में न सिर्फ़ु सिंध गवर्नमेंट बल्कि वफ़ाक़ी हुकूमत, फ़ौज जी नुमाइंदगी आहे, कैंटोनमेंट बोर्ड जी आहे, KMC, जेके बि इदारा कराची खे हिन महिल अलॻि अलॻि रिप्रेज़ेंट कनि था, उन्हनि सभिनीनि जी नुमाइंदगी आहे। तंहिंजे करे इहो थोरो सो मुतमइन आहे असां बि, ऑपोज़िशन बि, ऐं उहो त इन सां ईअं थींदो त यूटिलाइज़ेशन जेका बि हूंदी, जेतिरो बि आहे, 1100 अरबनि या 800 इन्हनि जा या उन्हनि जा, का ॻाल्हि इहा आहे त पैसो कराची में लॻे। जी, कराची जी जेका हालत आहे उहा ॾाढी ख़राब थी चुकी आहे। हुई त सही, पर हिन बारिशनि खां पोइ त जेको हिननि जा असल कम हुया उहे बि साम्हूं पधरा थी विया। त जेके एफर्ट्स वरितल आहे बकौल पीपल्स पार्टी जे, त उन्हनि रोड ठाराया, फ्लाईओवर ठाराया, उन्हनि जी हालतूं वञी ॾिसो त केॾा वॾा खॾा पइजी चुका आहिनि उते, उन जो मयार साम्हूं अची वियो। इहा शइ हाणे इहा फंड आयो, असां कराची जे हवाले से वेलकम कयोसीं, बिस्मिल्लाह, लॻे कराची सुधरे, कराची बहितर थींदो त पूरे पाकिस्तान ते उन जो असरु पवंदो आहे। कराची खां अॻिते जेको हालत आहे सिंध जी, उन जे हवाले सां बे इंतिहा रिज़र्वेशन्स आहिनि।
कराची खां अॻिते उमरकोट, थर, झुडो, मीरपुर ख़ास सां गॾु सफ़ा ॿुॾी चुका आहिनि माण्हू। ये रिजर्वेशन नुसरत तव्हांखे सूबाई हुकूमत सां आहिनि या रुॻो या वफ़ाक़ी हुकूमत सां बि आहिनि? छो त सिंध हुकूमत अंग अखर ॾिना आहिनि, 23 लख माण्हू यकीनन मुतासिरनि जी हालत तमामु घणी ख़राबु आहे, उन्हनि जी उहे वाहर थिए ई न पई जीअं सिंध हुकूमत खे करणु घुरिजे आहे। हिन ॻाल्हि में का ॿी राय न आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां चवंदो त उन्हनि बि रुॻो कराची खां निकिरी बाक़ी सिंध खे नज़रअंदाज़ करे छॾियो। बिल्कुलु इन ई लाइ त मां तव्हांखे चवां थी त पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जा अॻुवान सदरुद्दीन राशिदी PMLF जी अॻुवान जी हैसियत में 1-to-1 मुलाक़ात कई ऐं इन करे प्राइम मिनिस्टर सां मुलाक़ात कई त कराची असांजो दिलि आहे, सिंध जो दिलि आहे, हिनखे त तव्हां जेतिरो पैसो ॾींदव असां हुनखे वेलकम कंदासीं त हिते लॻे। पर कराची खां अॻिते जेके डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि सिंध जा उन्हनि जी हालत ॾाढी ख़राबु आहे। माण्हू यकीन कयो बिल्कुलु ख़तमु थी विया, उन्हनि जी लखें जी तादाद में उन्हनि जी फसलूं तबाह, घर तबाह, जानवर मरी विया। उन खां पोइ जेको पाणी निकाली कोन्हे, पाणी निकाली न आहे त मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा कीड़ा मकोड़ा मच्छर थी चुका आहिनि, उहो उन्हनि जी ज़िंदगी ख़तरनाक हद ताईं पुॼा आहिनि। त हिन इन मामले में त सिंध हुकूमत जी ड्यूटी हुजणी खपे त हुनजी पूरी कैबिनेट जेका आहे उहा इन्हनि कमनि ते लॻे। एॾो अरसो 12 सालनि ताईं इहा जेको डी वॉटरिंग करण जी मशीनूं हूंदियूं आहिनि, पंप्स हूंदा आहिनि, उहे सभु काथे आहिनि? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बल्दियाती हुकूमत जे हवाले सां जेकॾहिं इहा मशीनरी हुजे हा त यकीन कयो त उहा मशीनरी तव्हांखे नज़र अचे हा, पाणी कढंदा नज़र अचनि हा फसलुनि मां, माण्हुनि जे घरनि मां। पर जेकॾहिं हुजे हा त शायदि तव्हांजो चैनल असांखे ॾेखारे हा, पर हिन महिल ताईं तव्हांजे चैनल बि कोन ॾेखारियो। त इहो वॾो अलमियो आहे, बेइंतिहा वॾो अलमियो आहे। अॻिते हिकिड़ो वॾो कहत अचण वारो आहे। ॿी ॻाल्हि सभीन 20 डिस्ट्रिक्ट जेके जिन्हनि जे लाइ चइबो आहे आफ़त ज़दा, उहा नोटिफिकेशन निकितो आहे न, त मां हिननि जी पीपल्स पार्टी जी रिप्रेज़ेंटेटिव जेका बि हिते वेठी आहे उन अदी खां पुछणु थी चाहियां त छा नोटिफिकेशन कढण सां उन्हनि जे मरहम थी वियो, उन्हनि जे ज़ख़्मनि ते उतां उन्हनि खे सभु कुझु मिली वियो, उन्हनि जी जेका बि नुक़सानु थियो आहे उन जो तख़मीनो थी वियो? असांखे इंतज़ारु आहे त आफ़त ज़दा जो मतिलबु छा हूंदो आहे? कॉन्स्टिट्यूशन में इन जी जेका असल ट्रांसलेशन आहे इहा आहे त आफ़त ज़दा चवण खां पोइ, नोटिफिकेशन कढण खां पोइ उतां जी हैसियत यानी जेको नुक़सानु थियो आहे, जेको काथो लॻो आहे त माण्हू मरी विया, उनजो माल मरी वियो, उनजो जेको नुक़सानु थियो आहे उहो काथो कयो, उन खां पोइ उन जी हल करणो आहे। ॿ टे मिंट रहिजो, मां हिन जो जवाबु मुसरत ये सूरतहाल इहा सूरतहाल असां बि ॾिठी। मुतासिरनि जूं दाहूं आहिनि त पंहिंजा नवाज़ी ऐं करप्शन हिते बि थिए थी। माण्हुनि खे जेके टेंट ख़ैमा या राशन मिले थो उहो लिमिटेड माण्हुनि खे मिले थो, बाक़ी माण्हुनि खे नथो मिले। फौरी तौर वॾे वज़ीर पारां पैसा रिलीज़ कया विया हुआ, इन खां अॻु में पैसा रिलीज़ कया हुआ, केॾां विया इहे पैसा, किथे लॻा? अदी ॾिसो अदी नुसरत बिल्कुलु जेको हुनजो क्वेश्चन आहे वैलिड आहे, अहिड़ी ॻाल्हि कान आहे कि मां हुन ते को ग़लति मार्किंग थी कयां। मसला ये है अदी के जब भी अभी देखें जितने मुतासरीन थे जिनको टेंट की ज़रूरत थी, बिल्कुल टेंट मिले हैं। और इवन के मीरपुर खास में 6.5 लाख माण्हू मुतासिर थिया आहिनि। हिकिड़ो मोहतात अंदाज़ो आहे 20,000 ख़ैमा मुश्किल सां उन्हनि खे मिलिया। मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर पूरे सिंध की बात की जाए तो तकरीबन वो फिगर जो है ना वो करोड़ों में हो सकता है, लाखों में नहीं, ठीक है ना। अगर एक मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो बिल्कुल ऐसे हुए। उनकी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जो लोगों का जिनके माल मवेशी ख़राब हुए, जिनके घर बह गए, जिनके घर टूटे हैं, जिनके यहाँ अमवात हुई हैं, जिनके यहाँ ज़ख्मी हुए हैं, बिल्कुल सीएम साहब ने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म साहब को भी ख़त लिखूंगा कि जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें ज़ख्मी को 2 लाख रुपए दिए जाएं, और जिनके घर ख़राब हुए हैं या टूटे हैं या बह गए तो उनके भी कैलकुलेशन करने के बाद उनके भी उसी तरह से जाहिर बात है उनके जो मदावा है वो पूरा किसी सूरत में नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट के जिस तरह से भी हाथ में होगा वो बिल्कुल उनकी मदद करने के लिए तैयार है और ज़रूर करेगी। लेला, अब यही मैं उसके बाद में नुसरत की तरफ जाऊंगी। यही वफाकी हुकूमत की जिस तरह से रेन एमरजेंसी लागू की गई थी, तो रिलीफ एमरजेंसी क्यों नहीं? लोगों को रिलीफ के मामले में सुस्त रवि हमें दिखने में आ रही है, और वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर सिंध के 20 अजला के लिए क्या इक़दाम उठाएगी? क्योंकि वहाँ लोगों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे नुसरत ने कहा, इनकी पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वज़ीर आज़म से उम्मीद की जा रही थी कि वो अगर सिंध की राजधानी सिंध के एक शहर कराची आते हैं तो सिंध के दूसरे शहरों को क्यों नज़रअंदाज किया गया? देखिए, ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज किया गया, इसलिए खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही कि हम सिंध के लिए भी काम करेंगे। अभी उसको फाइनलाइज नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अनाउंस नहीं किया।
अभी जो हमारा ये कराची पैकेज के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनकी अनाउंसमेंट थी, इसलिए खान साहब ने पहले वो की है। इंशाल्लाह सिंध के हवाले से जो वफाक ने करना है वो भी जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी। बाकी रहा पीपल्स पार्टी की बात, पीपल्स पार्टी जो है वो इतना क्लेम करती है, हर चीज़ उनको वफाक से चाहिए होती है। तो मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी जो 12 साल से सिंध में है, उन्होंने क्या किया है सिंध की आवाम के हवाले से, रिलीफ के हवाले से? सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ उतना करते हैं ये लोग जो फोटो शूट इनका हो जाए, तस्वीरें बन जाए। बाकी अगर आप जाके देखें सूरत हाल तो वो वैसे अबतर है, बल्कि पहले से भी ज्यादा बुरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि सिंध हुकूमत अगर वो क्लेम करती कि वो सिंध की हुकूमत है और उसका जो हुक्मरानी पूरे सिंध पर है, तो ये तो बताए ना कि ये सिंध की आवाम के लिए क्या कर रही है। ना ये कराची देख सकते हैं, ना ये लाड़काना देख सकते हैं, ना सिंध का कोई और शहर, ना पानी का मसला, ना सेहत का मसला, ना कुदरती आफात। तो ये क्या कर रही है सिंध हुकूमत? सिर्फ तनकीद के लिए है, सिर्फ पैसे खाने के लिए, सिर्फ करप्शन करने के लिए है? हमने जो करना है हम कर रहे हैं, और वो मजीद भी इंशाल्लाह, मैंने आपसे कहा कि जल्द उसकी अनाउंसमेंट हमारे खान साहब सिंध के हवाले से जल्द करेंगे। अभी फाइनलाइज नहीं हुई, इसलिए इसको अनाउंस नहीं किया गया। देखें, मैं आपकी इजाज़त से और अदील नुसरत की इजाज़त से भी, क्योंकि उनकी टर्न है। वजह यह है कि मेरी बहन कर रही है, सिंध तनकीद करती है, तो हम तनकीद किस पे कर रहे हैं? आपने किया क्या है? आप 162 अरब का ऐलान करके जाते हैं, वहाँ नहीं करते हैं। आपके अपने जो इत्तेहादी हैं उन्हें आप एतमाद में नहीं लेते। आप करते क्या है? आप सिर्फ एतमाद में लेने के लिए सिर्फ अनाउंस करते जाएं और सिंध उस पर भी ना कहे। सिंध के आप हाथ पांव बांध दे, वैसे तो आप कभी नैब खड़ी कर देते हैं। जब देखेंगे इस तरह की बातें जब होंगी, जब आप कुछ नहीं डिलीवर करोगे, तो सिंध भी कहेगा, सिंध की आवाम भी कहेगी, आपकी अपोजिशन भी कहेगी, आपके इत्तेहादी भी कहेंगे, क्योंकि आपने इन 2 सालों में सिंध को या पूरे पाकिस्तान को तबाही किया। और किया क्या है आपने? मुसरत कोरोना में जितना अच्छा पीटीआई ने वर्क किया है ना, क्या वर्क किया? देखिए वर्क किया क्या? आपने, और दूसरी बात है, रोटी कपड़ा खाने के लिए तरस गए हैं। नुसरत पीटीआई वो आपने दे दी। बिल्कुल, हमने जॉब दे दी। नुसरत गाल बोलता ॿुधी पीटीआई के नुसरत आवाज अचे पियो तव्हां ताईं? जी, पीटीआई जा 2 साल छा, पीपुल्स पार्टी जे 12 सालनि के असां हाणे रोयूं था वेठा हिते। जेका सूरत हाल आहे इन्हनि तकरारनि में, इन्हनि सियासत में, सिंध जा माण्हू तव्हां ॾिठो ग्राउंड ते सोशल मीडिया ज़रिए बि तव्हां तमामु घणो एक्टिव रहो थियूं। सिंध जा माण्हू लुड़ी विया, ॿुॾी विया, ख़तम थी विया, बीमारियुनि जे वर चढ़ी विया आहिनि। उन बीठल पाणी में गंदगी, गलाज़त, बदबू, बीमारियूं ऐं मच्छरनि जो आज़ार। आख़िर कॾहिं कीअं माण्हुनि जी वहार थींदी? इन ते बि मूंखे ॿुधाइजो। ॿियो नालनि जे हवाले सां जेको ऑपरेशन आहे उन ते बि वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमत जी सियासत नज़र अचे थी। वफ़ा जो चवणु आहे त इन्हनि खे मुतबादिल ॾियणु सिंध हुकूमत जो कमु आहे, जॾहिं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत इन में जेको आहे सो सिंध हुकूमत खे जी मदद करे। अच्छा सभिन अॻु में त मां तव्हांखे ॿुधायां त हिन महिल 2 साल ऐं 12 साल जी जंग आहे जी, वॾो डिफरेंस आहे, मज़ाक न आहे। ॿियो हिकिड़ो जेको पीटीआई जी मुंहिंजी भेण चए पई त सिंध जे लाइ बि ऐलान कंदो, सिंध जे लाइ बि ऐलान कंदो, इन ते मूंखे तहफ़ुज़ात आहिनि। सिंध जे लाइ छा मतिलबु कराची सिंध जो हिसो न आहे छा? त असां हमेशह हिन शइ खे कंडेम कयो। तव्हां एज़ अ एंकर बि हिननि खे टोकियो त कराची खां कश्मीर सिंध आहे। बिल्कुलु कराची सिंध जो शहर आहे, सिंध जो दिलि आहे, सॼी सिंध असांजी आहे। हाँ, हुननि चयो त कराची का कर लिया, बाक़ी सिंध का भी करेंगे। बाक़ी सिंध छा मतिलबु आहे? जेकॾहिं असां लफ़्ज़नि में चवण में ई कंदासीं त पोइ हिन जो मतिलबु आहे त दिमाग़ में इहा शइ वेठी आहे। ॿी ॻाल्हि ॾिसो, सिंध के बाकी अज़ला, बाकी शहर में क्यों नहीं है? तो मैंने उसको आंसर किया है उस वर्डिंग के साथ। हाँ, नहीं, बोलने में एहतियात बहुत जरूरी होती है, वरना फिर ये बहुत ज्यादा आगे नुसरत साहिबा माशाल्लाह आप बहुत अच्छी सीजन पॉलिटिशियन है। ये वाली बात आप ना करें ना, मेरे दिल में ना करूं। जहाँ जो गलत होगा मैं उसको रोकूंगी, उसको और भी समझना चाहिए कि हाँ, अगर स्लिप ऑफ टंग हो गई है तब भी माने, और अगर डेलिबरेटली की है तो मैंने आंसर दिया है कि इंटीरियर सिंध का वो अच्छा, मैं एंकर को जवाब दे हूँ। मैं जी नुसरत प्लीज कंटिन्यू। सवाल किया है तो मैं जवाब दूं, वरना मैं प्रोग्राम से चली जाती हूँ। जी सभी हाणे 2 साल ऐं 12 साल जो हिकिड़ो सिलसिलो आहे, जेको हिकिड़ो वॾो डिफरेंस आहे। हिकिड़ी हुकूमत 2 साल थिया आहिनि, उन जी डिलीवरेंस बि हिकिड़ो सवालिया निशान आहे। उन में बि असांखे सवाल पुछणु ज़रूरी आहे, पर 12 साल खे वरी वधीक पुछणो आहे। हाणे 12 साल वारी जेका हुकूमत आहे, असांखे ख़बर आहे 12 साल में जेको असां ज़ुल्म ॾिठो आहे सिंध में, कराची खां कश्मीर ताईं। हिकु को डिपार्टमेंट खणो, उन खां पोइ उन ते तव्हां पूरो प्रोग्राम कयो त तव्हां पूरो प्रोग्राम न करे सघंदो, तव्हांखे महीना लॻी वेंदा। मां तालीम खणा त तालीम ते तव्हांजी रड़ियूं निकिरी वेंदियूं। त एजुकेशन जे हवाले सां 12 सालनि में
जेकॾहिं 12 वज़ीर बदिलिया वेंदा त तालीम कहिड़ी सुधरंदी तव्हांजी। कराची खां कश्मीर ताईं स्कूलनि जो हाल ॾिसो, उन खां पोइ टीचर्स जो हाल ॾिसो, इंफ्रास्ट्रक्चर ॾिसो, वरी तव्हां बजट खणंदव त अरब 5-500 अरब ऐं एतिरे अरबनि जो बजट हुजे, पोइ तव्हांखे ज़मीन ते कुझु न नज़र अचे। पोइ जेके इन्हनि जा लीडर्स हुजनि, अॻवान हुजनि, उन्हनि जा असां घर में वधियल हुजनि त तव्हांखे सवाल पुछणु पवंदो। इन खां अलावा पैसो खोड़ पियो आहे हिन महिल, जेको मुंहिंजो माण्हू आहे ॻोठनि में ऐं मरनि था, जेको हुननि सां हालतूं आहिनि, जेके तबाह बर्बाद थी फसलूं, किथे आहे उहो लख 2 लख? मूंखे अदी ज़रा 1-2 क्लिप त ॿुधाए या तव्हांखे 1 प्रूफ त ॾे त लख या 2 लख जेके ऐलान कया वेंदा आहिनि अॼु ताईं कंहिंखे मिलिया आहिनि? हिते अलाए केतिरा मर्डर थी विया, मरी विया, पुलिस में शहीद थी विया, आम माण्हू मरी वेंदा आहिनि। उन्हनि जी अॼु ताईं जेके मेरिट ते सीएम साहब मुराद अली शाह साहब ऐलान कयो त A1 ग्रेड या A ग्रेड जो ईंदो त मां उन्हनि खे इनामात ॾींदुमि, अलाए 10,000 लख जो अॼु ताईं मिलियो? ऐलानात थींदा आहिनि। प्रैक्टिकली ॿुधायो त छा अॼु ताईं कंहिं बि पोयां 2010 वारे सैलाब दरगान अञा अॼु बि झोपड़ियुनि में वेठा अथव? तव्हां कराची खां निकिरो, लाइन सां वीचारा ख़ैमा बस्ती ठाहे वेठा आहिनि, पुछंदव त चवंदा आबा 10-12 जा सैलाब दरगान आहियो। अड़े बाबा छो? कि असांखे पीपल्स पार्टी वारनि चयो त तव्हांखे अजा ॾींदासीं, घर ॾींदासीं, फ्लैट ॾींदासीं। ॿाहिरि मुल्कनि वारनि एॾी इमदाद कई, उहो पैसो किथे आहे? तुर्की इमदाद कई, चाइना इमदाद कई, उहो फंड आया, उहो फंड हिननि बाज़ारनि में विकिया। उहा जेका कणक हुई जेका ॿाहिरि मुल्कनि मां आई, उहो कुआ खाई विया। ॿाहिरि मुल्क मां जूस आया, हिननि जे लाइ पाणी आयो, उहो सभु हिननि विकिणी छॾियो। त असां हिन महिल छा एक्सपेक्ट कयूं? यानी असां त नांग खां कटियल आहियूं, हाणे असां नोड़ी खां बि ॾिजूं था। सो इहो सॼो लफ़्ज़नि जी गेम आहे। हक़ीक़त प्रैक्टिकली तॾहिं थींदो आहे जॾहिं सरज़मीन ते तव्हांखे नज़र अचे, करोड़ हुजनि या लख हुजनि। सिंध तबाह लॻो पिया बाबा, कराची खां कश्मीर ताईं। इन करे हिन महिल पीपल्स पार्टी खे इन लफ़्ज़नि जी गेम खां निकिरी उन्हनि माण्हुनि जी, उन्हनि जे हल्कनि में जेके जेके खटी हिन महिल असेंबली में वेठा आहिनि, उन्हनि जो कमु आहे पंहिंजे हल्के जे माण्हुनि जी वार कयो। असां ऑपोज़िशन खे त तव्हां हिननि 12 सालनि में टको फंड न ॾिनो। असांजे इलाइक़े जे माण्हुनि खे तव्हां ख़ैमा नथा ॾियो, टेंट नथा ॾियो। मूं वटि एॾे सबूत पिया अथव, एॾा फ़ोन कॉल मैसेजिस आहिनि, घणियूं था कनि। उन्हनि जे साम्हूं पंहिंजे माण्हुनि खे ॾियनि था, असांजे माण्हुनि खे छो इंसान न आहिनि, सिंधवासी न आहिनि, हितां जा रहाकू न आहिनि। एॾो थोड़ी वेदड़ कई वेंदी आहे, एॾो थोड़ी ज़ुल्म कयो वेंदो आहे, त सियासी इंतकाम आहे। जी मुसरत। अदी नुसरत, आपने बड़ी एक बात की एजुकेशन की, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़, आपने कहा कि सीएम साहब ने अनाउंस किया था कि जो बच्चे A ग्रेड या A1 ग्रेड लाएंगे तो उन्हें मैं 10,000 या 20,000 दूंगा। आपका जिस दिन दिल चाहे, आप मेरी बहन हो, आपका जिस दिन दिल चाहे, मैं कराची बोर्ड के चेयरमैन को अगर चाहें तो अभी भी आप लाइन पे ले सकते हैं कि मैं खुद उसमें मौजूद थी कि जितने बच्चों ने A+ ग्रेड लिए तो उन्हें 20,000 और 10,000 जो है ना वजीफा दिया गया। और आप पूछ लें। दूसरी बात आपने कही कि जी टेंट ऐलान का जिक्र किया, आप नहीं अभी ऐलान नहीं किया, अभी आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। नुसरत मेरी बहन, ऐलान नहीं किया गया। मेरा अपना भी ताल्लुक एजुकेशन से है। इस कराची शहर के अंदर एजुकेशन में मैंने काम भी बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये हुआ है और बच्चों को मिले हैं और इस वक्त भी बच्चों को मिल रहे हैं पैसे। एक चीज़। दूसरी बात आपने कहा कि एक दूसरे पर एलिगेशन और ब्लेम गेमिंग, कोई ब्लेम गेमिंग नहीं होनी चाहिए। ये शहर के लोग हमारे हैं। जब कोई एक दफ़ा कोई MPA MNA जब सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट होते हैं, जो सिलेक्ट हो गए उनका भी काम है कि उन्हें भी काम करना चाहिए, क्योंकि आवाम की फलाह के लिए। और ऐसा कभी भी नहीं है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि किसी को फलां को टेंट दे दें, वो नुसरत सहर अब्बासी को चाहने वाला है, या उसको टेंट दे दें, या मुसरत न्याजी का बंदा है। मैं समझती हूँ सब हमारे अपने बंदे हैं। बात कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, ये लोग ये बात कर रहे हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रही हूँ। तो वो तमाम के तमाम लोग हमारे अपने होते हैं, आपके अपने होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कहें कि ये नुसरत सहर अब्बासी के लोग हैं तो आप उनको पैसे देंगे और मुसरत न्याजी के लोग हैं तो उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। ऐसा कभी भी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया। यहाँ कराची में बैठी हैं, आप जाएं तो सही ना। नहीं, मैं बिल्कुल गई हूँ, मैं नुसरत बिल्कुल गई हूँ, मैं बिल्कुल गई हूँ। नुसरत वडी मेहरबानी, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। लेला प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। वफाकी हुकूमत की जानिब वज़ीर आला सिंध ने आज इशारा किया कि वज़ीर आज़म को ख़त भी लिख दिया है कि सिंध के बाकी अजला में ये सूरत हाल है। देखिए, ये चीज़ कोई काबिल एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। अगर उन्होंने ख़त लिखा है और उनको सिंध के हवाले से कोई रिलीफ वफाक से चाहिए तो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल उनको इंशाल्लाह पॉजिटिव जवाब आएगा।
क्योंकि देखिए इसी तरह मैं समझती हूँ कि मिलजुल के चलना चाहिए, ये किसी की ज़ाती बात नहीं है, ये आप आवाम की बात कर रहे हैं, सिंध की आवाम की बात कर रहे हैं। और सिंध की आवाम मैं खुद ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि बहुत मजलूम और इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो अगर उन्होंने ख़त लिखा है तो सबीना, आज मैं आपको आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ कि उनको बड़ा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आएगा। और इंशाल्लाह सिंध की आवाम, देखिए अब आप बोलेंगी ना अभी सिंध की इंटीरियर सिंध, अब इंटीरियर लगाना जरूरी नहीं होता, सिंध मीन्स के इंटीरियर को हम कहते हैं, अब वो नहीं कि उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसी तरह पंजाब में जाए तो लाहौर अंदरून है पंजाब और ये इस तरह की बातें होती हैं। इवन कि मैं मुल्तान जाती हूँ तो वो कहते हैं ये अंदरून कराची से मतलब इस कश्मीर तरह का के कहा पार्ट्स नहीं, को पूरी निशानदेही सिंध के लिए हमारी है और ये कराची सिंध का शहर है। बहुत शुक्रिया बेशक। आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अजो के हार्ट इश्यू प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।